So hi everyone, it is next lecture of magnetic effects of electric current, that is chapter 13 of class 10 physics or science. So in the previous lectures we have discussed about what is magnetic field, what is magnetic effect of electric current, what are the various forces that act on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So what are the different topics which we have already covered? Introduction, the properties of the magnet, the characteristics of the field lines, magnetic field of a bar magnet, right hand thumb rule, magnetic field due to current through a straight wire, magnetic field due to the current through a circular loop, factors affecting the magnetic field, solenoid, electromagnet, permanent magnets. Okay. So till here we have completed. In today's lecture we have discussed about force on a current carrying conductor in a magnetic field. Fleming's left and right hand rule. Left hand we already discussed. We discussed the electromagnetic induction, the Fleming's right hand rule. Okay. Electromagnetic induction, Fleming's right hand rule, electric generators working, alternate currents, advantages and the disadvantages of AC and the direct current. So all these topics we are going to cover in this lecture. Yes. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So suppose this is our uniform magnetic field B. In the previous lecture we have discussed about what is uniform magnetic field and what is non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field, that means a magnetic field is same at every point, magnitude is same, and the equipotential, magnetic field lines are at equidistance from each other. Okay, in the uniform magnetic field. So this is magnetic field. Suppose we have a current carrying conductor. This is our current carrying conductor having L length placed in this uniform magnetic field with some angle theta. ठीक है ना? आप इसको एक जो दूसरा डायग्राम NCERT में वो भी ड्रॉ कर सकते हो कि we have a stand, a current carrying conductor जो stand के साथ hang है and a horseshoe magnet is placed near it. ठीक है ना? So that's also you can draw. The current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field B. So what happened? So consider a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field B. Uniform magnetic field B. ठीक है? तो current carrying conductor, the current is I, carrying conductor of length L. Let L be the length of the conductor. ठीक है? So what happened? When it makes some angle, this conductor having L length makes some angle with the magnetic field B. So this magnetic field exerts some force on this current carrying conductor. What is the force? In this, the force acting downward, in this force acting upward. ठीक है? Making some angle theta. So the force acting in parallel, equal in magnitude and acting in opposite direction. ये जो force होगी ये parallel होगी, opposite directions में act हो रही होगी and having same magnitude. So this generates a couple. ठीक है ना? So what is the magnitude of that force? That force is equals to ILB sin theta. Derivation is not in class 10th, it will be in class 12th. So you have to only consider the magnitude.
कि जो भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो आई करंट फ्लो कर रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है बाय द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई करंट फ्लो कर रहा है एल लेंथ की कंडक्टर में विच इज प्लेस्ड इन बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सम एंगल थीटा, तो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इट इज आई एल बी साइन थीटा। इफ द कंडक्टर is parallel or anti-parallel to the uniform magnetic field B, यानी कि अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, सपोज इट यहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इसी तरीके से अगर कंडक्टर हमारा ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 और एंटी पैरेलल के केस में इट विल बी 180 डिग्री। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर? इट्स आई एल बी साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पे कितना होगा? इट्स आई एल बी साइन 180 डिग्री, ठीक है। एंड साइन एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 0 इन बोथ द केसेस, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू 0 इन बोथ द केसेस। व्हेन विल बी द फोर्स बिकम्स मैक्सिमम? सेकंड केस क्या है कि दिस फोर्स बिकम्स मैक्सिमम when थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि साइन जो है 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। दैट मीन्स मैक्सिमम जो फोर्स लगेगी वो लगेगी आई एल बी, ठीक है ना। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उस पे। जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे और वो मूव करेगा, ठीक है ना। इस पे जब फोर्स लगेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब फोर्स लगेगी, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। क्योंकि जो फोर्स लग रही है ना बेटा इस पे, वो कितनी आई एल बी साइन थीटा है। तो दोनों साइड से फोर्स लग रही है, यहाँ से भी आई एल बी साइन थीटा है, वहां से भी आई एल बी साइन थीटा है। तो जो फोर्स लगेगी इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ये जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एंड रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, इट experiences torque and rotates in the uniform magnetic field B. So this is a principle which is used in many electrical appliances like electric motors. Electric motors में क्या होता है? Electric motors are those electrical appliances which convert the electrical energy into mechanical energy. Electrical motors जो होती हैं वो electricity पे, electric current पे operate होती हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसपे एन वाइंडिंग वाउंड होती है, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोइल होती है, एंड इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो जैसे ही उसके थ्रू ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी हम करंट पास करते हैं उस कंडक्टर के थ्रू, सो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, रोटेट करता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ, it is the principle of electric motor, ठीक है, electric motor, right? So electrical motor is an electrical appliance which converts electrical energy into mechanical energy. तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कॉपर वाइंडिंग वाउंड कर रखी है एक आयरन पीस पे, एक आर्मेचर पे, एक रेक्टेंगुलर कोइल पे, दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड
So current carrying conductor placed in magnetic field, it experiences force, it experiences torque, due to which ये जो rectangular coil है it rotates, यानी कि जैसे ही करंट पास होगा वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट कर देती है, यानी कि काइनेसिस force on a current carrying conductor placed in opposite होती है, equal in magnitude, it generates a couple. Torque, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग इफेक्ट। वो जो आर्मेचर या वो जो कंडक्टर रोटेट कर रहा है वो किसकी वजह से रोटेट कर रहा है? इसी टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है आई एल वी साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगती है। जैसे ये एक पेन है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, इस पे इस तरीके से फोर्स लगेगी, ठीक है। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे होगा। ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज कंडक्टर। जब ये 90 डिग्री पे होगा तो ये मैक्सिमम रोटेट करेगा। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के उसमें कंडक्टर को, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ। करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कंडक्टर ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगी और ये ऐसे रोटेट करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? This is principle of electric motor. Next we have EMI, electromagnetic induction. What we call this phenomena? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. ठीक है? EMI. This phenomena is given by Michael Faraday. Who governed the two laws for EMI and are known as Faraday laws of induction. Understood? So this is a phenomena given by Michael Faraday, which commonly known as Faraday. Faraday also contribute many other phenomena like Faraday cages, the laws of electrolysis, Faraday laws of electrolysis, and these phenomena which discovered या invented by, given by Michael Faraday, known as Faraday laws of EMI, electromagnetic induction. तो electromagnetic induction Michael Faraday ने दिया था, जिनको हम Faraday induction भी कहते हैं। So what is EMI? The phenomena, yeah, whenever there is change in magnetic flux, ठीक है, whenever there is change in magnetic flux and linked with the coil, the change in the magnetic flux with respect to time and linked with the coil, then EMF is induced in the coil. Then EMF is induced in the coil. So this phenomena is known as electromagnetic induction. यानी कि जब भी magnetic flux या magnetic field में change होता है with respect to time and when it linked with the coil, then EMF is induced in the coil या current is induced in the coil. Induced का मतलब होता है induction, यानी कि opposite polarity का change होना। जब भी magnetic flux change होता है किसी coil में, so in the opposite direction EMF is induced, in the opposite direction current is induced. So EMI is a phenomena which tells about the induced current and the induced EMF, कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाते हैं एक मैग्नेट में या एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो EMF इंड्यूस होती है, मे बी इन द सेम कॉइल और मे बी इन द डिफरेंट कॉइल, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF का इंड्यूस्ड होना या करंट का इंड्यूस्ड होना इन अ कॉइल by the rate of change of magnetic flux is known as EMI, that is electromagnetic induction, and is given by Michael Faraday. And this rate of change of magnetic flux
is directly proportional to the EMF induced. ठीक है ना, that is E is equals to minus n d phi by dt. This is a formula for the EMF induced. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम and is linked with the coil, then EMF is induced. N is a number of turns. कितनी number of turns है उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस चेंज. तो ये हो गया फॉर्मूला EMF induced का. ठीक है. So this is EMI, electromagnetic induction. So this is Faraday first law, and the second law tells about the rate. कि as the magnetic flux change linked in the coil changes, then EMF is induced in that coil. So suppose if we have a coil, ठीक है, let us consider a galvanometer or magnetic compass. मैग्नेटिक कंपास ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, एंड गैल्वेनोमीटर शोज कि EMF इंड्यूस हुई है या करंट इंड्यूस हुआ है. तो करंट को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर. लेट अस कंसीडर अ मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो व्हाट हैपेंस इफ वी मूव दिस मैग्नेट, या हम यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल भी ले सकते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर भी ले सकते हैं. तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो या मैग्नेट हो, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक field. So when we move that conductor या move that magnet, there is change in the magnetic field, है ना. जब हम इसको पास लेकर आ रहे हैं, there are more number of magnetic field lines linked with the coil. बहुत ज्यादा नंबर में मैग्नेटिक कॉइल के साथ लिंक हो रही हैं, और हम मूव कर रहे हैं तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, एक बार कम हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स. ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, दिस यू स्टडी इन क्लास 12, वो होता है B डॉट ds. ठीक है, B डॉट ds. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, जिसकी वजह से, इसके चेंज की वजह से, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जिसकी वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगी, यानी कि करंट इंड्यूस होगा. सो अंडरस्टूड. सो बिना किसी वायर के हम मैग्नेट के मोशन की वजह से एक कॉइल में EMF इंड्यूस्ड करवा सकते हैं. सो दिस इज EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अंडरस्टूड ना. तो करंट इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर व्हेन यू मूव दिस बार मैग्नेट. ये यहाँ कंडक्टर यूज करोगे, दैट linked with the coil, EMF is induced in the another mutual inductance. What we call this? Mutual inductance. ठीक है. So this is the principle of AC generator or the transformer. The transformer is also based on the mutual inductance. एक coil में आप the current of magnitude, the magnitude of the current change and magnetic flux change that linked with the secondary coil, and EMF is induced in the secondary coil. दूसरी coil में जो है वो EMF induce होगी. तो magnetic flux एक का दूसरी coil के साथ link करेगा, change होगा, and then EMF is induced, EMF या current is induced in that another coil. So this is EMI. Understood? So it is a principle of AC generator and the transformer. अंडरस्टूड ना. कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट लिंक्ड विद द अनदर कॉइल, देन इन अनदर कॉइल EMF इज इंड्यूस्ड. ठीक है. एंड हाउ कैन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन इन केस ऑफ EMI, इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड EMF की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इससे पहले वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. We do this ना कि force experienced, how can we find the direction of that force? Direction of force कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में उस पे फोर्स कौन सी लग रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रही है. सो वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule to determine the direction of force, to determine the direction of
force. ठीक है, what is Fleming's left hand rule? We already discussed father, mother, child, force or motion of the conductor, and the magnetic field and the current, direction of current. ठीक है, FLHR, shortly हम इसको बोलते हैं FLHR, Fleming's left hand rule. तो father, mother, child, ठीक है, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन. दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is the direction of current, right? If we took an example, this is our magnetic field. force आपको पता है, होगी तो this, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया इस तरीके से, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर I. सो वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ, फोर्स कहां होगी? इनटू द स्क्रीन, इनटू द पेज, राइट. और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से कर सकते हैं. परपेंडिकुलर वाले को, ये तो क्या होगा, अलोंग द स्क्रीन हो गया, अलोंग द पेज हो गया. बट अगर यहाँ स्क्रीन से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या स्क्रीन के अंदर, अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane of the paper and is readily outwards, then it is represented by dot. तो आउटवर्ड डायरेक्शन को, पेज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डॉट. एंड क्रॉस, व्हेन इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड गोज इनटू द पेज, इनटू द स्क्रीन, एंड करंट गोज अप, then the direction of magnetic field, then the direction of force will be towards left direction. ठीक है, towards the left. If suppose it is asked, this is suppose a direction, it is north south direction, it is east west direction. If the direction of magnetic field is from south to north, ठीक है, ये south हो गया, ये north हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ है. एंड द करंट गोज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ये हो गया करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. देन द फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट. ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे. करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. तो फोर्स कहाँ होगी? टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, सो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर देखने को मिलता है. एक, इन विच यू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड यूज होता है टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट राइट हैंड होता है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए. यानी where we used electromagnetic induction principle, there we use Fleming's right hand rule. We will discuss what is Fleming's right hand rule. But firstly you understood Fleming's left hand rule now. ठीक है, so इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं Fleming's left hand rule पे. So we discussed EMI, electromagnetic induction. Faraday ने दिया था, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in the coil, या current is induced in the coil. तो बिना किसी वायर के, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, करंट इंड्यूस होता है. अब बल्ब को ग्लो कर सकते हो विदाउट किसी बैटरी से कनेक्ट किए हुए. दूसरे कोई आपको आसपास में या तो मैग्नेट का मोशन करवाना होगा, या फिर उस कोयल को बैटरी, दूसरी वाली कोयल को बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, या एसी प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट देयर इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द. और डीसी में दे रहे हो तो चेंज होना चाहिए मैग्नीट्यूड करंट का. तो बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट we can change the magnetic field. That means we can change the magnetic flux. So when there is change in the magnetic flux in the coil linked, the EMF is induced in the another coil. This is known as mutual inductance. ठीक है, and this is the principle of generator and the transformer. Now we are talking about Fleming's right hand rule. What is Fleming's right hand rule? If we stretch
in such a way that the thumb, forefinger, and the middle finger are mutually perpendicular to each other. Then the thumb points in the direction of force or the motion of conductor or the motion of conductor. ठीक है, thumb points in the direction of conductor. The forefinger points in the direction of magnetic field, and the middle finger points in the direction of induced EMF or current. Induced EMF or the induced current. If we draw the diagram, this will represent force या फिर motion of the conductor. This magnetic field B and this represents the direction of induced EMF or the induced current, right? This is Fleming's right hand rule. If we stretch our right hand in such a way that these three are mutually perpendicular to each other, then thumb points in the direction of force or the motion of the conductor, this finger magnetic field, this induced current. What is the difference between right hand, Fleming's right and left? Force same है, that is thumb. These fingers, four fingers, magnetic field, ठीक है. And these this middle fingers इसमें करंट को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी वेक्टर को. राइट हैंड में करती है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को. सो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि in the Fleming's right hand rule, how the direction of induced current or induced EMF represents. So middle finger represents the direction of induced current and induced EMF, and the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it, that is, it opposes the change in the magnetic field or magnetic flux. This is given by Lenz, that is Lenz's law. Okay, so this is Fleming's right hand rule. In AC generator, we use this Fleming's right hand rule to determine the motion of the conductor. कि current conductor जो है वो किस direction में move करेगा. By the Fleming's right hand rule, we can determine that. So we end today's lecture here. In the tomorrow's lecture, we will discuss what is AC current, what is DC current, how the AC generator works, and what are the domestic circuits. So we end today's lecture over here.